सध्या आम्ही असा मोयड्या आता फोंड ह्या गावान आणि आमकां सध्या अशी सकाळी खबर कळली की हांगासर एक जो कुत्रो जो डॉग जो आसा हो एक यूज जायना पळय ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जी आसा त्या बायन सध्या पडलेलो आसा 3 दीस जाले खंय हो जो कुत्रो जो आसा हो बायन एक पडलेलो आसा आणि बायन जर आमी पळयत जाल्यार सकाळी एक भुयार खंय जे होल आसा तेतून तो रावलेलो आसा जेन्ना हांगासरले काही लोकल जे नेबर्स बी आसा पळय तांकां आवाज येतालो की एक कुत्र्याचो खंय तरी आवाज येता ते नेबर जे आसा पळय ते सोदपाक तांच्यांनी सुरवात केली पूण तांकां तो मेळनासलो अखेरेक जी फॅमिली हांगासर कोण लोकल लोक रावतात पळय फुडल्यान तांच्यांनी सोदपाक ट्राय केलो तर तांकां कळून येयलें की हो जो कुत्रो जो आसा हो बायन पडलेलो आसा आनी कमीत कमी ह्या हो कुत्र्याक 3 दीस जाले हो बायन पडलेलो आसा तांच्यांनी तुरंत म्हापसा फायरीक कॉल केलो म्हापसा फायर रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली आनी तांच्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरवात केली आसा कमीत कमी ही बाय जी आसा ही बरीचशी खोल आसा आनी यूज जायना बाय तांकां बरोसो त्रासूय येयलो त्या कुत्र्याक भायर काडपा खातीर पूण अखेरेक म्हापसा फायरीन त्या कुत्र्याक सध्या रेस्क्यू भायर सेफली रेस्क्यू करून काडलेलो आसा आनी सध्या हो कुत्रो आसा तो सध्या सेफ आसा आमी पूर्णपणे जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जे लोकल जे आसात तांच्यांनी जे फायरीक इन्फॉर्म केल्ले पळय ते लोकलां कडल्यान जाणून घेवया व म्हापसा फायरी कडल्यान जाणून घेवया ह्या कुत्र्या बद्दल अपडेट अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे मोयऱ्याच्यान असं आता जे एक अपडेट येयलेली की बायन एक पेटो पडला म्हणून कितें नेमकी अपडेट कितें आसली पेटो बद्दल अपडेट आसले 11 आमकां म्हापसा कंट्रोल रूमाक कॉल आयलें की एक पेटो बायन पडला म्हणून आमी हांगा इमिडिएटली टर्न आवट केलो हांगा येयले जाल्यार आमी पळयलें जाल्यार पेटो बायन पडला पूण तो होलान आसलो बरो डीप 3 मीटर भितर होल आसलो तो बायन सो आमचे फायर फायटर हितीश परब साईराज नायक अक्षय सावंत आनी ड्रायव्हर ऑपरेटर आमचो स्वप्नेश कलंगूटकर हांणी पळयलो आनी ते चौगूय बायन देवल्या बरोबर तेंच्यांनी पळयलें की एक बरो डीप होल आसा म्हणून भितर जवळपास 4 ते 5 मीटर सो इमिडिएटली तेंच्यांनी स्टार्ट केलें रेस्क्यू ऑपरेशन आनी दोरी घेतली आनी रेस्क्यू रॉडान ताका भायर काडून ट्राय केली चौगांनी तो कसोच येयनासलो तरी आमचे फायर फायटर एक आपल्या जिवाचो धोको घालून ताका रॉड घातलो आनी भायर रेस्क्यू अलाव भायरसून ताका भायर काडलो तो आतां सेफ डॉग सेफ कितें अपडेट आसली की 2 दीस पयलीं पडलेलो खंय 3 दीस पयलीं पडलेलो आनी तो तांकां त्रास करतालो भितर आड्डी मारतालो ओके बाय कितें डीप आनी कितें डेंजर जाल्लें देंवपाक बीन कितें डेंजरस जाल्ली आनी ती डीप आसली आतां ते लोकांनी कितें करपाचें एक प्रिकॉशन घेवंक जाय की कोणें एक भुरगो एक जनावर कोणें भितर बायन पडोंक शकता त्या खातीर एक वयल्यान जाळी मारपाची सेफ्टी म्हणून सर स्ट्रीट डॉग्स अशे रस्त्यार भोंवतात पळय गोरवां आसूं या स्ट्रीट डॉग्स आसूं कितें सांगूंक सोदतात ओनरांक आतां हांव ओनरांक सांगूंक सोदता तेंच्यांनी ती आपली जी गोरवां कितें डॉग आसा न्हू ते आपले पळोवंक जाय आपले आसा की ना ते घरान चॅक करपाक जाय सो तांकां मागीर कळटलें न्हू बाबा आपलो ना बीन म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय सदींच आपल्या हाका गोरवां बिरवांक ती सांबाळूंक जाय आपल्या घरान सो सध्या आता सेफ रेस्क्यू केले सेफ केले आमच्या फायर फाइटरांनी ओके थैंक यू क्या हुआ था अभी एक डॉग गिर गया ऐसा लगता है हम लोग को पता ही नहीं था हम लोग रहते हैं सामने 2-3 दिन से वी कुड हियर द बार्किंग हाउलिंग बट वी कुडंट फाइंड इट मेरा इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है उसने कल देखा कि इधर था सो दैट्स हाउ एंड हम लोग को तो कुछ समझ नहीं था निकालने को थैंक्स टू द फायर डिपार्टमेंट अनबिलीवेबल कभी गिरा था ये 2 दिन हो गया होगा 2-3 दिन से हम लोग को आवाज आ रहा है रोज अच्छा सामने रहता हूँ लाइक यू नो हाउलिंग बट पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आवाज आ रहा है वी वेंट माय वाइफ एंड माय सिस्टर दे वेंट सर्चिंग ऑल द वे बैक बट नहीं मिला किधर भी बाद में कैसे मालूम पड़ गया यहाँ पे है मेरा इलेक्ट्रिशियन था ना उसने वो भी ढूंढने निकला था कल तो नसीब से उसको दिख गया रात को या कुछ या शाम को इधर पड़ा था तो सुबह में और वो बाल्टी डाला हम लोग ब्रेड डाला वो आ ही नहीं रहा था देखो ना इतना डीप है अंदर वो अच्छा तो उसके बाद ये लोग को बुलाया सर जी लोग आए प्रॉम्प्टली फटाक करके दे केम एंड दे डन अ अमेजिंग जॉब I think we should go and thank them first instead of me. मैं कुछ नहीं उधर. They're just amazing. It was puppy, right? Yeah, it was a small puppy. You saw, no? Small puppy. I don't know where that puppies come from. But the puppy is totally safe now. Yeah, absolutely. He ran out, but it's not eaten for 2-3 days. So. Okay. Unless it's eaten some frogs and all inside. Hopefully. But it is not from this area. It's not from this area. Somewhere from that side. Achha. A small puppy here. Unreal. नाम बोल तुम्हारा? मेरा नाम जादू तानाजी मुंशी। क्या हुआ था यहाँ पे अभी?
इधर 3 दिन से कुत्ता हम चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम ढूंढ के देखा उसको, मिला नहीं। बाद में कल शाम को एक बार देखने के लिए इधर आ गए हम। बाद में वो एक व्हीर है ना, उसमें देखा उधर अंदर छुपा हुआ था, वो अंदर पानी में ट्राई किया लेकिन नहीं आ रहा था। बाद में सुबह फायर वालों को कॉल करके सर को बोला कॉल करने के लिए, कॉल करके बुलाया। बाद में उन्होंने निकाला है। आपको क्या आवाज आ रहा था? हाँ, आवाज आ रहा था, चिल्लाने का आवाज आ रहा था। वो बहुत रो रहा था, 3 दिन से भूखा था लगता है। भूखा था। हाँ। बाद में आपने ओनर को फोन किया? हाँ, ओनर को फोन किया। अच्छा ठीक है। कुछ आइडिया है कितने बजे गिरा था? कभी क्या पता नहीं। सुबह हमको एक 10:30 बजे चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। अभी उसको सेफली निकाला हाँ, बाहर? सेफली निकाला है। ठीक है। In the well for 2-3 days, and it was just like constantly crying, and we went looking around, but we never thought it was in the well. But these kind of well needs to be shut, you know, because these are like animals, they can't talk, you know. And but the fire brigade came in like literally 10 minutes from Mapsa, and you've seen how much they struggle. You can see it inside, you know. So just thanks a lot. What else can I say? It was a puppy, It's a puppy. It was a puppy. but like it was really not tiny. followed in the water. Thankfully, well. because there was a crevice inside, it was trying to hide it. If it was in the water, I don't think it would have survived, you know. But I just got to know. I live in Sholim, so my brother called me, and I came running, and he called Sir. fire brigade. So How deep will be the well? This I think this well must be at least 8-10 feet, I think. So he was inside the well from 2 days? It was there, yeah, because we could hear it crying, but we went around everywhere, and as soon as when we were looking for it, it would go quiet. You know, if you're calling for it, it would go quiet. So it's safe now, na? It's, Thank you, ma'am. thank you.